Dear students, we were solving exercise 5.1 till question number 5 we have solved. Now question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angle. If angle 1 is decreased, what change should take place in 2 so that both the angles will remain supplementary? If 1 is decreased, then the angle 2 will automatically increase. Can two acute angles be supplementary? Both of them are acute. Since we know that the sum of acute angles can't be 180 degree, so the sum of acute angles is not supplementary angle. Obtuse. We know that the sum of two obtuse angles is more than 180 degree, so here it is not possible. We know that the sum of two right angles is 180 degree, so this is a supplementary angle. Question number 8. An angle is greater than 45. Greater than 45 का है बच्चों. Is it complementary angle greater than 45? No. यदि एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा होगा, तो फिर वो 90 से अबव चला जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 45 वाला not possible. Or equal to 45, it is also not possible. Less than 45, yes. If one angle is more than 45, then other will less than 45, so it is possible. In the adjoining figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Angle 1 is adjacent to angle 2. Since here vertex is common and one side is common, therefore these angle 1 and 2 are adjacent angles. Is angle AOC adjacent to angle AOE? AOC is adjacent to angle AOE. AOE. No, because the common side will be between the non-common sides, but it is outside to the non-common sides, so these angles are not adjacent angles. Do angle COE and angle EOD are supplementary angle? Yes, because these angles are on a straight line, and we know that on a straight line the sum of angles are 180 degree, so these angles are supplementary angles. If the sum of angles are 180 degree, then they are linear pair also. Are angle BOD and DOA are supplementary? Yes, because these angles are also on a straight line, and on a straight line the sum of angles are 180 degree, so these are supplementary angles. Is angle 1 vertically opposite to 4? Yes, angle 1 is vertically opposite to angle 4. What is the vertical opposite angle of 5? 5 का vertical opposite angle क्या होगा? तो this is angle 5
इसके अपोजिट में ये बन रहा है सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी विल बी वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करना बच्चों। 11 इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर एक कॉमन साइड तो है, लेकिन एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए था, बट द वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 इज हियर एंड द वर्टेक्स ऑफ एंगल 2 इज हियर, so these angles are not adjacent angles. Question number 12 find the values of the angle x y z in each of the following। तो सबसे पहले बच्चों 12 का फर्स्ट, since 55 and x are vertically opposite and vertically opposite angles are equal, so x equal 55 डिग्री, हमें एंगल x पता चल गया। फॉर वाई, वाई में आप देखिए बच्चों दिस एंड दिस टू एंगल्स आर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वी नो दैट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री, सो वाई प्लस 55 इक्वल 180 डिग्री बिकॉज दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ वाई इक्वल 180 minus 55 डिग्री, सो y इक्वल माइनस कर दीजिए 5 to 1 125 डिग्री। सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड z, then see here this angle and this angle are also on a straight line, so these angles are also सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं और लीनियर पेयर भी कह सकते हैं बच्चों इसको आप। सो z प्लस 55 इक्वल 180, सो z इक्वल 180 माइनस 55, सो z इक्वल 125 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of 12th। x, this angle 40, this angle x and this angle 25, these three angles are lie on a straight line, so the sum of these angles are 180 degree। x plus 40 degree plus 25 degree equal 180 degree, x plus 65 degree is equal 180 degree, x equal 180 degree minus 65 degree, that is 115 degree। Now for z, first we find y and 40 are lie on a straight line, so these angles are linear pair, y plus 40 equal 180, y equal 180 minus 40, y equal 140 degree। And since angle z and angle 40 are vertically opposite, so z equal 40 degree। आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।